Hello, designing aspirants. So, all the students who are targeting MDiS from IITs, today here we are to discuss seed syllabus for the same. So, अगर आपका target है MDiS from an IIT college, so let's talk about what are the things that we need to prepare. So, seed की अगर हम बात करें, so this seed has been divided into two parts, part A and part B. In part A, the questions are on aptitude part. The questions are on aptitude part, and in part B, the questions are on design and drawing. In this video, we will be talking about part A, that is aptitude section. So in this aptitude section, what are the major headings जहां से question पूछे गए हैं and पूछे जाते हैं. So the syllabus has been mentioned on the official website of SEED. You can also visit the same and have access to the syllabus. But आज इस वीडियो को मैं यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ so that you guys have understanding of these are the topics and what kind of questions have been asked in the past और क्या expected है. So let's start the video. Quickly बात कर रहे होंगे हम major headings पर and then हर एक heading पर detail में बात होगी. So the very first thing first is part A. Major headings are visualization and spatial reasoning, environment and society, analytical and logical reasoning, language and creativity, design thinking and problem solving, observation and design sensitivity. Right. So these are the skills on which you guys will be tested. Overall, there are questions on these topics only as per official notification. Official notification website इस तरह से सिलेबस को मेंशन करता है एंड फॉलोड बाय दिस हम आगे ये स्लाइड्स में देख रहे होंगे कि डिटेल में उन्होंने क्या बात कही है. हर एक हेडिंग का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज आल्सो देयर. वी विल बी रीडिंग द वर्ड्स एज वेल एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड and we will try to read between the lines as well, right? So चलिए continue करते हैं. The very first thing first, visualization and spatial ability. So when I say visualization and spatial ability, what comes to your mind exactly? जैसा कुछ स्क्रीन पर आपको डिटेल दिख रहा है वैसा ही कुछ आपके दिमाग में भी आना चाहिए. So there will be questions on 2D and 3D figures, images, complete images, incomplete images, partial images, pattern of images. If this is the pattern, what image should be appearing next? ऐसे कुछ questions होने चाहिए. Exactly. Past में यही prove किया गया है. It has been proven with the past papers that questions like this have been asked. जिन इस टॉपिक पर जो आप और हम बात कर रहे हैं वैसे ही कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, राइट? बट दिस इज नॉट द एंड एंड दिस इज नॉट इट. देयर आर सर्टेन अदर पॉसिबिलिटीज जो यहां पर इसमें इंक्लूड हो सकती हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. When it says 2D shapes and 3D objects and their spatial relationships along with transformation and manipulation are the words. So there are some keywords जिन पर मैंने underline किया है. There are certain keywords: transformation, manipulation, 2D shapes and 3D objects and their spatial relationship. राइट. सो आपको 2D ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, उसका 3D वर्जन आपको क्रिएट करना होगा या एक रेफरेंस मिलता है कि 2D ऑब्जेक्ट या 3D ऑब्जेक्ट इस तरह से कुछ हो रहा है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या रिलेशन है. विद दैट रिलेशन यू नीड टू बिल्ड अनदर 2D फिगर इनटू अ 3D फिगर, राइट? सो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस पास्ट में सीड ने पूछे हैं एंड दे आर वेरी क्लियर ऑन दिस दैट दिस इज वन ऑफ देयर मेजर सेक्शन ए और पार्ट ए का मेजर सेक्शन, राइट? चलिए आगे बात करते हैं.
environment and society. When you are going to be a designer, you are going to be a designer for the society. And what are the challenges that our society is facing these days? Let's talk about that. So, आपके बारे आपको उन सारे प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस है या नहीं, एंड हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स, व्हाट आर योर अप्रोचेस, व्हाट आर योर सॉल्यूशंस, उस पर भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाता है, राइट? सर, इन एप्टीट्यूड सेक्शन भी ये इस तरह से फ्रेम हो रहे होते हैं। आई नो क्रिएटिविटी वाला स्कोप बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड सेक्शन पर नहीं है, बट स्टिल दे test you guys on this particular topic just because they want to know whether you are aware of what is happening in the environment, what is happening in the society. क्या आप अवेयर है नहीं है, इस बात को लेकर टेस्ट हो रहा होता है, राइट? सो लेट्स लुक एट द syllabus part. General awareness of environmental factors. So factors have been specified such as climate, population, water, vegetation, pollution, weather, natural resources. Specifically यही सारे टॉपिक्स आपको मेंशन किए गए हैं when it is said about awareness of environment, right? General awareness of environment पर देखिए there are major headings like climate 1, population 2, water 3, vegetation 4, pollution 5, weather 6, and natural resources 7. So these are the 7 subheadings जिन पर आपको फोकस रखना है when you are preparing. Prepare plan करके, right? Make sure you are preparing in a planned manner. आप बहुत सारी चीजें randomly ना read कर रहे हो. That's why they have specified it in the syllabus. And their implications on the design of products, images, infrastructure, and environment. तो ये जो मेजर 7 हेडिंग्स पर बात की है, इनका इम्प्लीकेशन क्या होगा प्रोडक्ट्स पर, इमेजेस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनवायरनमेंट पर, उनको लेकर भी बात होगी, राइट? अवेयरनेस ऑफ डिजाइन टर्मिनोलॉजीज, social and cultural connection with design, history of the design artifacts, and socially responsible and environmentally sustainable design responses, history of art, culture, and literature. So, how much things are there to be covered? बहुत कुछ है. They have divided it in such a manner, and they have specified it as well, that you don't have to read a lot, but you have to read in detail, right? आपको डिटेल में क्या क्या रीड करना है, that has been mentioned. What are the major chunks that you have to keep your focus on have been specified, right? So that will definitely be helping us to prepare. Fine. So these are the topics. अब देखिए, let me highlight the things that are of our importance. Implication on the design. किनके implication की बात कर रहे हैं हम डिजाइन्स पर? उन मेजर 7 फैक्टर्स के implication की बात हो रही है जो मेंशन किए गए थे, राइट? एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑन डिजाइन. एंड डिजाइन किन डिजाइन्स की बात कर रहे हैं? किन डिजाइन्स की बात कर रहे हैं? सो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, हम बात कर रहे हैं इमेजेस की, हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, एंड हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के डिजाइन पर इम्पैक्ट, इम्प्लीकेशन, हाँ, थोड़ा सुनकर ऑकवर्ड लगता है, बट यस, इन सारी चीजों का एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. साइंस हैज प्रूवन इट, राइट? देयर हैव बीन वेरियस स्टडीज ऑन इट. सो इनके इम्प्लीकेशन क्या रहे हैं, उसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, उन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फाइन.
हिस्ट्री में भी आपको बहुत स्पेसिफिक हिस्ट्री रीड करना है। कौन सा? आर्ट, स्कल्पचर एंड लिटरेचर। सर सोसाइटी पर जब बात कर रहा है तो देखिए, सोसाइटी पर जब हम बात कर रहे हैं तो आपको डिजाइन टर्मिनोलॉजीज का अवेयरनेस, सोशल एंड कल्चरल कलेक्शन कनेक्शन विथ डिजाइन, डिजाइन के साथ सोशल एंड कल्चरल कनेक्शन को लेकर भी बात हुई है, राइट? देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। A designer must be analytical as well as logical. आपको कोई एक सिचुएशन पर एक ही तरह से सोचना नहीं है. That's why they are testing you on analytical and logical reasoning. So what are the things they are testing? Ability to analyze given information logically, right? आपको given information को logically analyze करते आना चाहिए. बहुत important quality है. क्लाइंट ने एक मेल लिख दिया है, उस मेल को रीड करके हाउ क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग अस टू क्रिएट अ डिजाइन, राइट? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो वो कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए. इसीलिए दे आस्क क्वेश्चंस ऑन एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस. एबिलिटी टू वे ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड सॉल्यूशंस अगेंस्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया, राइट? सो आपको अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया भी डिजाइन करने होंगे, डिसाइड करने होंगे, और ओपिनियंस को वे करते भी आना चाहिए कि कौन सा ओपिनियन कहाँ किस सिचुएशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, किसका वेटेज कब ज्यादा है, किस ओपिनियन का वेटेज कब कितना ज्यादा है, ये सारी क्लैरिटी हमें चाहिए, राइट? अलॉन्ग विद दिस, एबिलिटी टू use logic and structured thinking to deduce from a short passage which of a number of statements is the most accurate response to a posed question. So अब आपको एक सिचुएशन पर बहुत स्पेसिफिकली कौन सा वाला रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा वो भी आइडेंटिफाई करना है. फाइन, फाइन, क्लियर? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. Next is language and creativity. So ability to understand passages commonly used in English language, ability to think creatively in terms of alternative, ability to distinguish, innovate and innovative options and thinking out of the box. देखने में बड़ा छोटा लगता है बट बहुत सारी डिटेल अपने साथ कैरी कर रहा है, right? Ability to understand passages used in commonly, passages को अंडरस्टैंड करने का एबिलिटी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है. कॉम्प्रिहेंशन करेक्ट नहीं हो तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, राइट? सो कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत फोकस है. अलॉन्ग विद दिस, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव थिंकिंग, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, गिवन सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से एनालाइज करना, उन पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, ये सारे एक्सपेक्टेशंस है, राइट? लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, डिजाइन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो every designer has to think for a problem solution, right? Or multiple angles, multiple situations पर आपका solution applicable होना भी चाहिए. That is why design thinking and problem solving is an important part of seed syllabus. Seed syllabus का बहुत important part है design thinking and problem solving. There will be situations जहाँ पर आपको एक particular situation के alternatives provide करने होंगे and hence they ask multiple select questions. एक ही solution नहीं हो सकता, एक से ज्यादा solutions भी किसी एक problem के possible है and you have to identify that. That is why they ask multiple select questions in seed examination, right? Let's look at the next one. Observation and design sensitivity, ability to detect concealed properties in day-to-day life and think critically about them, right? Concealed properties, the properties that are not visible, but they are there,
राइट। सो ऐसे प्रॉपर्टीज जो दिख नहीं रहे होते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज जो अपीयर नहीं हो रहे होते हैं, बट वो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो हमें उन प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें यूटिलाइज करना, राइट। एंड वी हैव टू थिंक अबाउट दोज प्रॉपर्टीज। Also, ability to discern subtle differences in visual properties and aesthetic outcomes. So, aesthetic outcomes में difference आपको समझ आना चाहिए, बहुत बेसिक slight से changes, minor changes in visual properties of any object or material must be visible to you. You must be able to differentiate, and उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं उन पर भी आपको काम करना है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर टू बी कवर्ड इन सीड syllabus. So guys, we at Creativich help you understand each of the subheadings of the syllabus, and we prepare you for the exam on these headings so that you can take good care of your part A section for seed examination. So thank you guys. I'll be seeing you in our next video.